Hey guys, दिस इज अनिकेत भोसले और आज की इस वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट क्या भोला 2 3D में रिलीज होगी। सो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अजय देवगन सर के लिए भोला वाज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट एज ही डायरेक्टेड द फिल्म एंड नॉट इवन दैट भोला वाज अ 3D एडेप्टेशन ऑफ तमिल फिल्म कही थी दैट वाज रियली क्रिएटिव फॉर रीमेक टू बी ऑनेस्ट। एंड फरवरी महीने में दृश्यम 2 रिलीज हुई। दृश्यम 2 वाज वेरी सक्सेसफुल ऑन बॉक्स ऑफिस एंड मे बी एटलीस्ट इन दैट पीरियड ही वाज अज्यूमिंग द सेम सक्सेस फॉर भोला। एंड एज यू नो इनिशियली भोला वाज नॉट दैट सक्सेसफुल एज दृश्यम 2 और लोगों को फिल्म का 3D भी समझ में नहीं आया। सो कीपिंग दैट इन माइंड बड़ा क्वेश्चन आता है कि पार्ट 2 एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और अगर फिल्म को ग्रीन लाइट कर दिया जाता है तो क्या पार्ट 2 भी 3D में रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए मेरे कुछ पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करूंगा कि क्यों भोला 2 3D में होनी चाहिए। Point 1, looking at the 3D cinematography, it felt like the creators knew how to make a good 3D film. I know they did not shot this film on native 3D camera, but I can see the 3D cinematography throughout the whole film, so that matters. They knew how to make a good 3D film. They actually made a good 3D film. They now know the pros and cons of making a 3D film. उन्होंने कुछ ऐसा learn करा रहेगा जो उनको पहले पता नहीं था। उन्होंने कुछ डिस्कवर करा रहेगा कि हम लोगों ने ये गलत करा। सो पार्ट 2 में वो फिक्स कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली लुकिंग एट दिस फिल्म इन 3D आई रियलाइज जो पोस्ट 3D कन्वर्जन है इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, और फिल्म का जो 3D सिनेमेटोग्राफी था वो भी काफी इमर्सिव था। आई वाज वेरी हैप्पी विद द 3D प्रोडक्ट दैट आई गॉट। आई डू बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर द 3D क्राइटेरिया, especially with the pop-outs, but I think if they can fix that, part 2 can be a good 3D film coming from Indian cinema. With the good 3D conversion, I believe कि part 2 को native 3D cameras में shoot करने की भी ज़रूरत है नहीं। They can stick with the same 3D cinematography with some enhancement and a little bit of more pop-outs, और हमें एक अच्छी 3D film मिलेगी Indian cinema से। Point 2, not depending on another film anymore. Kaiti was very entertaining, but the creators knew that this is not a 3D film, so they did not intend that film in 3D. But भोला के जो director और DOP they thought कि इस रीमेक को हम थोड़ा 3D जिंगर ऐड करेंगे, so that will look very immersive. And honestly, that was very subtle 3D that I thought कि it makes sense because they knew फिल्म में हर जगह opportunity नहीं है कि हम 3D ऐड कर पाए, so they went for the 3D cinematography route. So फिल्म का subtle 3D रहेगा, so they are not forcing 3D anywhere or everywhere. So it is very smart move and it needs to be appreciated because it is not easy to make a 3D adaptation जो 3D में कभी इंटेंड नहीं करता था. It is a very bad analogy, but it's like आपको तारक मेहता अच्छा लगता है, बट वन डे क्रिएटर डिसाइड्स कि एक एपिसोड 3D में रहेगा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मूव टू पुल आउट बिकॉज हाउ डू यू मेक अ कॉमेडी एपिसोड इन 3D. Similarly, Bholaa का भी similar situation. It is not a comedy film, but it does not have that much of opportunity to be a good 3D film. But somehow they pulled that shit off. They were like, we can make it good in 3D with keeping subtle 3D, and it worked pretty much. And the most difficult part is sticking to the script because this is not an original film that we are making. We have a ready-made script ready. We just have to copy paste it. I know उन्होंने काफी सारे bits change करे थे, especially in the action set pieces. But initially they have to stick to the direction, the screenplay, the locations, everything, the writing. So you have to be grounded to the script. So आपको काफ़ी restrictions मिलती है. You don't have that 100% freedom anymore to make your own changes. जैसे कि आप एक 3D film के लिए बना सकते हो. You have to make 3D within a given material. And even in that restrictions, they have made a pretty much good 3D film. So assume करते कि now because Kaiti 2 exist नहीं करती है, तो they have this 100% liberty कि वो पूरी फिल्म को डे लाइट में शूट कर सकते हैं या फिर लोकेशंस उनके फेवर में रहे. स्पेसिफिकली एक एग्जांपल दूँ तो बारिश वाले सीन्स के आप लैंडस्केप लो 3D में अच्छा दिखेगा, आप मास्टर सीन लो 3D में अच्छा दिखेगा, आप क्लोजअप शॉट लो 3D में अच्छा दिखेगा, आप मैक्रो शॉट लो 3D में अच्छा लगेगा. इट्स लाइक फ्यू सर्टन लोकेशंस, फ्यू सर्टन क्राइटेरिया दैट कैन मेक सेंस इन 3D. अगेन इफ दे आर कीपिंग 3D इन माइंड राइट नाउ, दे कैन कीप द 3D इन द डेवलपमेंटल स्टेज. सो वो स्टोरी भी 3D के हिसाब से बना सकते हैं. आई नो दिस इज वेरी सेल्फिश ऑफ मी ओनली प्रोडक्टाइजिंग 3D, बट दैट्स माई जॉब considering this channel. So right now I believe they have this good opportunity of एक अच्छी 3D film बना सकते हैं. They can put efforts for 3D from the developmental stage, locations, everything they can keep from their side now. You don't have to follow any script anymore. So I believe इसलिए part 2 को 3D में रखना. Point third रहेगा ABCD फ्रेंचाइजी. जैसे ABCD फ्रेंचाइजी का एक USP है कि जितने भी उनकी फिल्में आई वो डांस के ऊपर बेस्ड होती है और सारे के सारे 3D में रिलीज होते हैं. सिमिलरली भोला कैन बी द सेम थिंग. भोला कैन बी द एक्शन 3D फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड जो सारे फिल्में एक्शन होती है और सारे फिल्में 3D में रिलीज होती है. सो दैट कैन बी अ थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई Bholaa 2 should be in 3D. So guys, that was my video on why Bholaa 2 should be in 3D, and I would also like to conclude this video by saying that कि maybe Bholaa 1 का 3D में होना और पार्ट 2 का भी 3D में होना अभी इतना कुछ सेंस नहीं बनेगा, बट मे बी दिस कैन बी अ बेबी स्टेप जहाँ पर
3D की वेव स्टार्ट हुई इंडियन सिनेमा में. Maybe it will take time to connect these dots, but ये dots ऐसे धीरे धीरे connect हो सकते हैं. So please support Indian 3D cinema. And that was my point. I don't think so इस वीडियो में ज़्यादा कुछ सीखने जैसे था, but you know, it's just general discussion I guess. And see you guys in the next video.